So let us start with the MCQs, remaining MCQs from gravitation. Okay, just read this fourth question here. Two planets of equal mass move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. If the masses of each particle is m, then the speed of each particle is. Just wait. ओके तो देखो ठीक से यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ इक्वल मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. मतलब देखो ये सपोज ये सेंटर है और ये रेडियस r है और यहाँ पे एक पार्टिकल है और उसी डिस्टेंस पे दूसरा एक पार्टिकल है यहाँ पे. ठीक है, इसका मास m है और इसका भी m है. ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो इसी r रेडियस में घूम रहे हैं. इस तरह से इस सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं. ठीक है, इस तरह से. अभी देखो, when the two particles revolve under the action of their mutual gravitational force of attraction, what does it mean? It's देखो इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर, इस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो सेकंड पार्टिकल की वजह से फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको बोलेंगे Fg. और इस पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो फोर्स काम करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ काम करेगा. करेक्ट है. दिस इज द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is denoted by Fg, which will be expressed as G into M upon. अभी यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है चेक करो एक बार ठीक से. What is the distance between these two particles? It is going to be 2r. Do you agree with this? So total distance between these two particles is going to be 2r, which is to be whose square is to be put here. Correct है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2r का whole square. Okay. Or at the same time, these two particles are revolving, so in a circular motion. So they will experience one more force, that is the centrifugal force, which is along the radius away from the center in this way. तो ये जो forces इनके ऊपर काम करेंगे तो ये इसको हम बोलेंगे Fc, that is the centripetal force or centrifugal force. Okay. तो और ये centrifugal force के बारे में हम जानते हैं. The centrifugal force is actually equal to mv square upon r. So यहाँ पे आएगा m into इस पार्टिकल के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका मास m है, वेलोसिटी उसका मान लेते हैं v, तो इसलिए v स्क्वायर अपॉन r. r मतलब यहाँ पे उसका रेडियस, वो यहाँ पे r ही रहेगा, नो डाउट. सो अभी यहाँ पे इन पार्टिकल्स को सक्सेसफुली रिवॉल्व करते रहने के लिए कंडीशन ये है कि the centrifugal force acting on this particle in this direction must be exactly balanced by the gravitational force acting on it in this direction. So these two forces must be opposite and equal. Opposite तो already है, तो अगर वो मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल हो जाए तब जाके वो रिवॉल्व कर सकेंगे सक्सेसफुली. तो इसलिए हमको यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई करना है कि Fg must be equal to Fc, and if we use it then we get this G into m square upon 4r square, which is going to be equal to Fc, where Fc is nothing but m into v square upon r. So simply we can cancel out this m from both sides, and r also can be cancelled from both the sides, so that we get this G into m upon 4r, which is equal to v square. And hence we can, if we take the square root on both sides, then we get this v is equal to root of this gm upon 4r. Correct है? Which is already there in this option number 3 here. Yes, very good.
Okay, so this is already the option number 3. We are getting it here. एक्चुअली ये शीट मैंने आपको ऐप में शेयर किया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, एंड अगर आपने इसमें से कुछ सॉल्व किया है और उसमें से अगर आपको कुछ डाउट आया है तो वो भी पूछ सकते हो आराम से. हेलो सर, बोलिए. हाँ है ना सर, 4 बजे ही. ओके. ओके, सो चलो 26 वाला करके देखते हैं. ओके, ट्राई दिस 26th वन. यस, क्वेश्चन नंबर 26. See here, it tells us that the gravitational force between the two bodies is decreased by 36% when the distance between them is increased by 3 meter. The initial distance between them is. Okay, तो देखो ठीक से ये हमको पता है ऑलरेडी कि force, the gravitational force is given by the formula G m1 m2 upon r square. करेक्ट है. सो इससे ये पता चलता है कि force is inversely proportional to r square. Okay, and when the distance between them is increased by 3 meter, the gravitational force decreases by 36%. Okay, so what does it mean is, suppose f ये तो एक दो पार्टिकल्स को जब हमने इनिशियली r डिस्टेंस पे रखा था तो उस समय उनके बीच में जो फोर्स है वो f था. चलो ठीक है. But when the distance between these two particles is increased, suppose this particle is taken away from this particle here by 3 meter. तो अगर सपोज ये 3 मीटर से हम उसको दूर लेके गए सपोज, तो यहाँ पे जब उसको रख दिया तो उस समय ये जो डिस्टेंस है उनके बीच में ये कितना बन जाएगा, एक्चुअली r+3 बन जाएगा. करेक्ट है. और यहाँ पे अभी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सपोज f डैश बन जाएगा, जो कि पहले कितना था, f था. तो अभी f डैश जो है वो ये दिया हुआ है कि f डैश विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और f डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ. देखो ठीक से, अगर ये f का जो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी कि इट इज f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो f डैश के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, वी कैन से इट विल बी g into m1 m2 अपॉन r+3 का होल स्क्वायर. करेक्ट है. देखो ठीक से, यस, r+3 द होल स्क्वायर. राइट. तो अगर अभी यहाँ पे इन दोनों f डैश और f के बीच में जो रिलेशनशिप दिया हुआ है तो वो यहाँ पे ये है कि the gravitational force between the two bodies is decreased by 36%. What does it mean? It means the new gravitational force F dash here is the original force minus 36% of original force, that is F only. तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो F dash equal to F minus 36% of F है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा F dash is actually going to be F minus 36% का मतलब होता है 36 upon 100, right, into f as it is. So if we take this f common, then we can get this f into 1 minus 36 upon 100. करेक्ट है, जो बनता है 64%. करेक्ट है. So f dash can be written to be equal to 64 upon 100 into f, right. और वैसे भी ये समझ सकते हैं कि अगर 36% से फोर्स डिक्रीज हो गया तो मतलब वो बचेगा कितना, 64% बचेगा. मतलब 64% बन जाएगा, मतलब ये 64/100 टाइम्स बन जाएगा. मतलब ये अगर कैंसिल करेंगे इसको 4 से तो 4 16s are 64 and 4 25s are here f. तो ये f डैश जो है वो 16/25 टाइम्स ऑफ f बन रहा है. लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि f डैश और f इन दोनों के फॉर्मूले ये जो है, तो ये वाला f का फॉर्मूला और ये f डैश का फॉर्मूला वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा g m1 m2 अपॉन r+3 का होल स्क्वायर. करेक्ट है.
and that is going to be equal to 16 by 25 into again this G m1 m2 upon r का whole square only, जिसमें से अभी देखो G m1 m2 will just get straight away cancelled, right? And what we are left with is simply 1 upon, देखो ठीक से 1 upon r plus 3 का whole square is equal to 16 by 25 into 1 upon r square, correct है? And then we can just cross multiply it here and get it as 25 r square is going to be equal to 16 into r plus 3 ka whole square. And if we just take the square root of this, then we can be able to get this as 5r is equal to 4 into r plus 3. So that if we just simplify this further, we get this 5r is actually equal to 4r plus 12, right? And then we can be able to get this r equal to 12 meter. Very good. Okay, so r is going to be equal to 12 meter in this way. Okay, so in this way, we have got it as 12 meter. Yes. देखो एक बात इसमें ये जो है ना, वो हम एक्चुअली बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं अगर हम एक सिंपल सी चीज अगर याद रखते हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, करेक्ट है? तो इसमें देखो अभी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब क्या कि r स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से. एंड इट मींस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट f, ऐसा भी तो लिख सकते हैं. अभी जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि force is decreased by 36%. That means the new force f dash is going to be 64% of the original one. That means f dash becomes actually 64 by 100 times of the original force, which means that f dash is going to be actually 16 by 25 times of f, correct है? तो फोर्स जो है वो 16 by 25 टाइम्स बन जाता है. अभी अगर फोर्स, ये जो फोर्स है वो अगर 16 by 25 टाइम्स बन जाए और वो यहाँ पे रूट के अंदर प्रेजेंट है और रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन भी है ना, डिनोमिनेटर में भी तो है, तो आर डैश कितना बनेगा? न्यू आर का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल आर के वैल्यू के हिसाब से कितना टाइम्स बनेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एफ का वैल्यू यहाँ पे 16 by 24 डाल सकते हैं. तो इससे हमको मिलेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 16 by 25. How much it is? It becomes 5 by 4. Do you agree with this? 5 by 4. तो ये 5 by 4 times r बनेगा, which means that r dash is going to be actually 5/4 of r, करेक्ट है? बट ये जो r और r dash के बीच में जो रिलेशनशिप दिया हुआ है, और एक रिलेशनशिप दिया है कि r dash is going to be r plus 3, right? And since r dash is going to be r plus 3, we can get that r plus 3 is equal to 5 by 4 times of r, and then we can just cross multiply it here so as to get 4 times of r plus 3 is equal to 5 times of r, and then we can get 4r plus 12 is equal to 5r, which also means r is equal to 12. Once again the same thing here, correct है? So in this way we can get the same answer once again by this another method. चलो ठीक है.
most of them already we have done of this that type. हाँ ये देखो, ये 38 वाला देखो ठीक से, 38th one, just read it. See, the radius of Earth is r and the acceleration due to gravity on its surface is g. The minimum speed with which the body must be thrown from the surface of Earth so as to reach at the height of r/4 is. तो इस सिचुएशन के लिए हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला बना के रखा है जो कि हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी गिवन एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन must be equal to the change in potential energy which is given by the formula mgh upon 1 plus h by r. अगर आपको याद है यही फॉर्मूला हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिराइव किया था. ओके, तो अगर ये वाला यूज करेंगे तो इसमें से हमको ये m कैंसिल हो जाएगा और 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो v² इक्वल टू क्या मिलेगा, simply 2gh upon 1 plus h by r. Correct है. And if we take this square root on both sides, then we get this v is equal to root of 2gh upon 1 plus h by r. Okay, तो अभी यहाँ पे हमको v जो निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना डालना है, r/4 डालना है. So just put it here and get this answer finally. So 2g into r/4 in bracket divided by 1 plus h by r, where h is nothing but r/4 again divided by r as it is, so that we can just cancel this r from both sides so as to get this root of 2g r/4. ठीक है, keep it as it is, 2g r upon 4, that is to be whole divided by 1 plus 1/4. Correct है. And what is this 1 plus 1/4? It's going to be 5/4, right? And hence we can get this v to be simply equal to 2gr upon 4 the whole divided by 1 plus 1/4, which is nothing but 5/4. Correct hai? So here it is 5 upon 4. So if we cancel out this 4 from both sides, then the velocity is found out to be simply 2gr divided by 5, which is already there in the option 4. Okay, so the fourth option must be correct one. Yes, 44 वाला करो, देखो एक बार ठीक से. Question number 44. Just check. Okay, 3 identical particles, each of mass m, are arranged at the corners of equilateral triangle of side length L. If they are to be in equilibrium, then the speed with which they must revolve under the influence of the one another's gravitational attraction in circular orbit circumscribing the triangle is. तो देखो मतलब सिचुएशन ऐसा है, actually this will require a big board, so we can just maximize this board. So just remember the question. Okay, क्वेश्चन 1-2 मिनट के लिए याद रखने के लिए ट्राई करो. देखो, 3 identical particles of each of mass m are arranged at the corners of equilateral triangle of side L. Okay, if they are in equilibrium, then what is the speed? So देखो यहाँ पे फिर, yes, so this is the situation. This is the first particle A, suppose the second particle here B, and this is the third particle, that is C. Okay, so these are the 3 particles which are arranged at the corners of an equilateral triangle. Okay, तो equilateral triangle के corners पे ये तीनों particles हमने arrange करके रखे हैं. ठीक है, तो अभी देखो इन तीनों का mass actually same है. m is the mass of each particle here, and suppose length of the triangle is L here, तो इन दोनों के बीच में distance कितना है, L है. ठीक है, तो ये distance L है, यहाँ पे ये distance भी L है और ये distance भी already L दिया हुआ है. चलो ठीक है, तो अभी इसमें
अगर ये तीनों पार्टिकल्स को घुमाना है, all these three particles are getting rotated in a circular orbit, ठीक है. सपोज इन तीनों को हमने एक टेबल पे रख दिया, ठीक है, और बाकी दूसरा कोई भी फोर्स उनके ऊपर काम करने वाला नहीं है, हाँ, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनके बीच में जो डेवलप होगा वही उनके ऊपर काम करने वाला है. तो अभी क्या होगा कि इसके ऊपर ये ए पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, ये दोनों बाकी दोनों पार्टिकल्स जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे जरूर, राइट है ना. तो due to the force exerted on this A, due to this B and C, the particle will get attracted towards this direction, right? And even the net force acting on this particle B due to the both of these remaining particles will be inverse again. Even at the same time C जो पार्टिकल है इसके ऊपर भी बाकी दोनों A और B जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना, तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो उसकी वजह से इसका जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रहेगा. सो अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस, देखो ये ए के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, बी के ऊपर इस डायरेक्शन में और सी के ऊपर इस डायरेक्शन में. तो इस नेट फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे विल जस्ट कोलैप्स एट सम पॉइंट, करेक्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्स. बट हियर द सिचुएशन इज दैट all these three particles are kept on some table and they are rotated. जैसे ये रोटेट करना चालू करता है, suppose all these three particles are getting rotated in a circular orbit in this way. So because of this circular motion, every particle will acted upon by a force which is called as a centrifugal force, which is acting along the radius away from the center like this. So C will experience the force in this direction, A will experience the force in this direction due to the centrifugal force, and B will experience the force in this direction here. So all these three particles will experience the centrifugal force due to the circular motion. And this centrifugal force, अभी यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस बचते हैं. Either it is possible, क्योंकि ये देखो हर एक पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है अंदर डायरेक्शन में. इवन ए पार्टिकल के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. और बी के ऊपर भी अगर देखते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आउटवर्ड्स. अभी इन तीनों के ऊपर जो फोर्सेस काम करेंगे इसमें हमारे पास ऑप्शन ऐसे है, देखो ठीक से दो तीन ऑप्शन हमारे पास है. एक तो ऐसा हो सकता है कि द फोर्स एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो मतलब अगर हर एक पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम है, so net force will be in the inward direction, and because of that still the particle will just get attracted and stick together after some time. Okay, but other situation, second situation is that fc is more than fg, मतलब gravitational force जो है तो वो यहाँ पे छोटा है but fc जो है वो ज्यादा है. So in this case the particles will get detached from each other and they will move away from each other continuously and finally they will just be separated at infinity. तो ये होगा second situation में जब fg less than fc होगा तब. But we don't want both of these situations, any of these situations. We want a third equilibrium situation in which the particle will continue to revolve under the action of their mutual gravitational force. That means the gravitational force acting on these particles must be exactly balanced by the centrifugal force acting on them. This is the basic condition you have to apply here. So ये हमको condition use करना है. उसके लिए अभी हमको fg भी निकालना पड़ेगा और at the same time fc भी निकालना पड़ेगा. fc निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, that is mv square upon r. और fg निकालने के लिए भी हमारे पास रेडीमेड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है जो कहता है कि the force between two particles is given by g m1 m2 upon r square. Okay, so बात बची यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे इन दोनों के बीच में सपोज इस C के ऊपर अगर हम कंसीडर करते हैं, C is the point and particle under consideration. Okay, so what are the forces acting on this point particle C due to gravitation? So gravitational force acting on this C due to A will be in this direction here. So that force will be given by this here F. इसको हम बोल देंगे चाहिए तो FA चलेगा ना, FA. Okay, at the same time the second force will be acting on this due to the point particle B here, which we can call it as FB.
okay, FB. And if in magnitude, we can see that this FA is actually going to be G into M1 M2. अब यहाँ पे ये M1 बन गया और ये M2 बन गया, इसलिए यहाँ पे आएगा M1 M2 मतलब M into M, and that is to be divided by the distance between these two particles, which is given to be L here. Correct है? That is the length of equilateral angle. So यहाँ पे L का square आ जाएगा. Do you agree with this? L square will be there here. Yes. अभी ये FA हो गया. FB FC के बारे में क्या बोल सकते हैं? Sorry, FB के बारे में. FB मतलब the force acting on this point particle C due to B here. Okay, so it will be actually G into M again. लेकिन यहाँ पे M1 मतलब कौन है? C का मास और M2 मतलब B का मास है, जो कि आखिर M ही है actually, क्योंकि तीनों का मास सेम है. And the distance between them is once again going to be L because it is a equilateral triangle. So उसके तीनों साइड सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये L square आ गया. Okay, अभी देखो ठीक से, ये अगर दो फोर्सेस है और ये दोनों फोर्सेस कितने एंगल पे इंक्लाइंट है? 60 डिग्री पे इंक्लाइंट है. करेक्ट है? 60 डिग्री पे. सो बोथ ऑफ दिस टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट व्हिच इज गिवन बाय दिस पैराग्राम लॉ. तो अगर हम ये पैराग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पैराग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट लाई करेगा. तो डायगोनल का जो डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है. उससे भी आगे जाके दो फोर्सेस जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंट होते हैं उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास रेडीमेड एक टेबल मैंने बना के दिया था आपको मेथड ऑफ मैथमेटिकल मेथड के अंदर. याद होगा आपको. अगर दो फोर्सेस या दो कोई भी वेक्टर्स P एंड Q अगर सपोज इक्वल है और वो अगर 0 डिग्री पे इंक्लाइंट है तो वो 2P इतना रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं. अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंट है तो √3 टाइम्स ऑफ P इतना रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं. 90 डिग्री इंक्लाइंट होने से √2P और 120 डिग्री से P और 180 से 0 इतना रिजल्टेंट वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बात हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कि 60 डिग्री पे जब दो वेक्टर्स इंक्लाइंट होते हैं तो वो √3 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ देम इतने मैग्नीट्यूड का एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं. तो जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंट दो फोर्सेस FA एंड FB will produce a resultant which is equal to √3 times of each of them, and hence you can say that this √3 times of FA or FB will be the net force FG force acting on this gravitational force acting on this particle at C. तो C के ऊपर जो FG काम करेगा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करेगा वो कितना होगा? तो वो √3 टाइम्स ऑफ FA या FB होगा, नो डाउट. सो ये हमको मिल गया FG और FA कितना है हमको पता है ऑलरेडी. वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ FA एज एनी टाइम in this formula here and get this FG finally. तो FG कितना मिल रहा है हमको? √3 times of G M square upon L square. That's it. So give this as equation number 1 because we need to find this FC also here. अभी तक हमको FC भी निकालना है. तो FC कैसे निकालने का? उसके लिए तो हमको रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज mv square upon r. करेक्ट है? mv square upon r, where m is going to be the mass, v is the velocity which is to be found out, and r is the radius of this circular orbit. But the most important question here is that how will you get the radius of that circular orbit? तो देखो उसके लिए ये कंसिडर करना होगा हमको. ये सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये उसका सेंट्रॉइड बनता है, सेंट्रॉइड. तो और ये तुमको पता होगा ऑलरेडी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ऐसा होता है कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर सारे कोइंसाइड करते हैं. ऑल ऑफ देम जस्ट कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑल आर सेम at this in case of equilateral triangle only, and here it is given to be it is an equilateral triangle, right? So that is the benefit here. तो ये हमारा फायदा होगा यहाँ पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होंगे जरूर. लेकिन वो जो सेंटर है तो उस सेंटर्स का इस पॉइंट ए सी से जो डिस्टेंस है वही तो उसका रेडियस कहलाएगा ना. उसी रेडियस में ये पार्टिकल घूमने वाला है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट दैट रेडियस हियर? आर कैसे निकाल के दिखाएंगे? उसके लिए देखो ये L हमको पता है ऑलरेडी, but we want to find out this R. So let us drop a perpendicular from this centroid on this side B A. So AC, okay.
AC के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये देखो ये परपेंडिकुलर भी है और उसका लेंथ ये L है जरूर। तो अभी हमको ये निकालना है, R निकालना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपली हमको एक सिंपल सा चीज यूज करना है कि देखो this length is L, we have dropped a perpendicular and we want this length R here. So can you find out this angle? Yes, no doubt it will be 30. Why? Because yes, very good. Because this whole angle is 60 actually, and this is just an angle bisector also. ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सब सेम ही होता है इसके लिए, इक्विलेटरल एंगल के लिए। तो इसलिए ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बन जाएगा। अगर ये 30 है तो ये उसका, ये जो साइड है, ये वाला साइड, ये उसका हाइपोटेनियस है, और ये वाला साइड कौन है, उसका एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस इज नथिंग बट cos, करेक्ट है। एंड वी आल्सो कैन सी क्लियरली दैट इफ दिस द टोटल साइड इज L, ये पूरा साइड अगर L है तो उसका आधा इधर से लेके इधर तक क्या होगा, जरूर L/2 होगा, राइट। तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि cos ऑफ 30 इन दिस ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल अगर यूज करेंगे तो cos 30 कितना होगा, जरूर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब L/2 डिवाइडेड बाय R, करेक्ट है। तो इसमें से हमको R मिल जाएगा आराम से। देखो क्योंकि cos 30 कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 and this must be equal to L/2R, and hence we can just cancel out this 2 here and just be left with R is equal to L/√3, correct. Once we get this radius of revolution, yes, L/√3, radius of revolution is L/√3, and then in that case we can be able to find out this FC easily, force, centrifugal force acting on this particle. So C पार्टिकल के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, FC जिसको बोल रहे हैं, so that will be given by the formula FC is equal to mv square upon R, where R is nothing but the radius, which has to be expressed as L/√3 here, so that this formula for the force, centrifugal force, becomes actually mv square upon R. R के बदले आ रहे हैं, आने वाला है L/√3, correct. And then we can be able to find out this FC easily as √3 times of mv square upon L, correct है. So give this as equation number 2. Already we have find out this equation number 1 Fg, and Fc is there in equation number 2. So just to suppose from equation number 1 and 2 and this equation, which is the basic characteristic condition for all these three particles to continue to revolve, that is Fg must be equal to Fc. तो अगर Fc is equal to Fg अगर हम कर देंगे तो Fc के बदले यहाँ पे आ जाएगा √3 mv square, करेक्ट है, upon L, which is going to be equal to Fg, where Fg is nothing but this √3 into gm square upon L square, correct है. If we just simplify this further, then we get this √3 cancel, m cancel once, and L also cancelled once, and what we are left with is simply v square is going to be equal to gm upon L, and hence v actually becomes equal to root of gm upon L. This is actually going to be the final result which we want here. That is the velocity with which the all these three particles will revolve in circular orbit. Let us check the options. Okay, so root of gm upon L. Yes, so gm upon L is the second option, will be the correct one. Okay.
ओके, ये 61st वाला देखो ठीक से एक बार, क्वेश्चन नंबर 61. ओके, yes, question number 61. The particles each of mass m are placed along x-axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, that dash so on up to infinity. Then the gravitational field strength at origin due to this particle system is, so see here, suppose this is the x-axis and suppose we have number of particles like this. This is suppose the first particle which is at x equal to 1 meter, then at 2 meter, the third particle is at 4 meter, then it is at 8 meter and so on up to infinity. ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, भाई ये डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, फिर ये 8 मीटर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ओके, तो अभी इन सभी पार्टिकल्स की वजह से ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा. देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, दैट इज g इज गिवन बाय gm अपॉन r स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए. इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे मेजर किया जाता है, ग्रेविटी से ही मेजर करते हैं ना, और ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, gm अपॉन r स्क्वायर है. बिल्कुल, तो अगर वो हम यूज करेंगे यहाँ पे तो g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये हमको यूज करना है. लेकिन पार्टिकल्स कितने हैं, ये देखो, पार्टिकल यहाँ पे एक m मास वाला पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है. तो ये सारे पार्टिकल्स जो है वो ओरिजिन पे अपना फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं, मतलब ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं. तो इसलिए टोटल इफेक्टिव ग्रेविटी एट द ओरिजिन हियर विल एक्चुअली बी द सम ऑफ the gravity produced by all these particles produced individually. ये सारे जो particles है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी की वजह से जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा, तो इन सब का जो भी इंडिविजुअल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है, उन सब का अगर हमसे सम करेंगे, वेक्टर सम अगर करेंगे, तो उससे हमको नेट ग्रेविटी मिलने वाला है. सो दैट नेट ग्रेविटी वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, एंड रिमेंबर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट हियर it's that all the particles are, number of particles are infinite. So it is given that infinite particles are there here. So अभी infinite particles की वजह से कितना gravitational field पैदा होगा, कैसे निकालेंगे. तो देखो G1 के लिए क्या आएगा, देखो G, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है. सिर्फ यहाँ पे m तो सेम ही है सबका, सिर्फ r डिफरेंट है कि नहीं. तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए r कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा gm अपॉन 1 स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस G2 के लिए क्या आएगा, gm अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि वो 2 इतने डिस्टेंस पे है. तीसरा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, देखो 4 डिस्टेंस पे है, करेक्ट है, 4 मीटर. तो इसलिए वो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पैदा करेगा, तो वो इस फॉर्मूला से दिया जाएगा gm अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस चौथा पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पैदा करेगा, वो हम दिखाएंगे gm अपॉन 8 स्क्वायर इस फॉर्मूला से, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी अगेन. तो इस तरह से ये सारे टर्म्स हमको ऐड करने हैं. अभी इसमें से अगर हमने gm को अगर कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा बताओ, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, सो 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली, सो इट बिकम्स 1 ओनली, प्लस यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना, 4, करेक्ट, प्लस अगेन दिस थर्ड टर्म विल बी 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, मतलब 16, then again this plus here it is going to be 8 ka square, which is 64, and so on up to infinity again. But the question here is that how will you get the sum of all these infinite numbers? The answer of this question have been studied by you in sequence and series. If you have done it carefully, तो sequence and series के अंदर हमने ये देखा है कि अगर एक sequence है, GP अगर है, जिसका first term A है, second term AR square, then AR cube, and if you there are infinite terms of this GP, and if suppose R is less than 1, अगर R का वैल्यू या mod of R is less than 1 है, तो उस केस में
S infinity के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, sum of infinite terms of this GP. In general, sum of n terms of an GP is given by a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, correct है? But when this r is less than 1 and when number of terms are infinite, then S infinity can be written to be simply equal to the first term a upon 1 minus r. Very good, Atharva. So this is the formula for finding the sum of n terms, which we have already studied in sequence and series in mathematics. Okay, so we have to apply this formula here. So देखो एक बात समझ के लो ठीक से कि जो लेवल 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं. एक्चुअली वो बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स भी यूज करने पड़ते हैं. जैसे यहाँ पे अभी मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ रहा है, इसलिए तुमको वो डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट इन द रियल सेंस. सो यही होता है, जो सारे जो लेवल 3 के या लेवल 4 के क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली उसके अंदर कोई ना कोई दूसरे चैप्टर के अंदर सीखे हुए जो कंसेप्ट्स है या दूसरे चैप्टर्स या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर सीखे हुए जो कंसेप्ट्स है वो तुमको उधर अप्लाई करने पड़ते हैं. कभी तो 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में जो या 10th स्टैंडर्ड में जो कंसेप्ट हमने पढ़े हुए होते हैं मैथ्स के अंदर, वो कंसेप्ट हमको यूज करने पड़ते हैं. जब जैसे कि अभी हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना पड़ा, कभी कोसाइन रूल या कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ा, इक्विलैटरल एंगल के प्रॉपर्टीज हमको अप्लाई करने पड़े, या कभी वेक्टर्स का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअली दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सो अभी अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका सम हम आराम से निकाल सकेंगे, because we have already the formula for sum to infinity of a GP, and you can check easily that this is a GP only. The first term is 1, second term is 1 by 4, third term is 1 by 16. If you multiply this 1 by 4 by 1 by 4 once again, then we get this as 1 by 16. Again, if we multiply this 1 by 16 even by 1 by 4 once again, then we get this 1 by 64, and in this way. So every term is getting multiplied by 1 by 4 every time, and that's why we can say that this is a GP with a 1 and r 1 by 4, which is already satisfying this condition, that is r is less than 1, correct है. तो ये r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा भी तो है जरूर, और उसकी वजह से हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे a के बदले क्या आएगा. देखो ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो a कितना है 1 my upon 1 minus r, r मतलब कितना है यहाँ पे 1 by 4 है. तो ये अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको मिलेगा gm into 1 upon minus 1 upon 4 मतलब 3 by 4, and then we can be able to solve this as 4 by 3 into gm, and that is actually going to be the answer. That is the net gravitational intensity at this origin. It is already present there in this option 3 here. If you check carefully, तो option 3 वही है 4 gm upon 3, correct है. चलो ठीक है. So in these questions, तो यहाँ पे इसके बाद भी बहुत सारे questions है वैसे, you can try them your own. Okay, so but जो theory level पे और MCQ level पे जो chapter है वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पे फिनिश हो गया. ठीक है, we declare that this chapter has been finished here. Okay, तो next time हम next chapter start करेंगे, which is the mechanical properties of solids. Okay, mechanical properties of solids, ये वाला chapter हम start करेंगे next time. उसमें meanwhile अगर आपको कुछ डाउट है इसमें या कोई MCQ अगर आपको नहीं आया या नहीं पाए तो वो आप पूछ सकते हो आराम से.